Good morning students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. Children, today we are meeting for our revision session of chapter number 2, addition and subtraction of two-digit numbers. Yes, today we are going to revise the chapter. So, in this chapter we are going to learn two things. One is addition and the other is subtraction. We have already learned addition, but let us learn it in brief. Okay, so first of all, addition on number line. What is number line? You already know number line means a line is drawn and numbers are placed at regular intervals and you have to add or subtract on those. Okay, for adding you have to count forward. You already know what is counting forward, jumping forward. And for subtraction, you have to jump backward, that is counting backward. Okay, so based on that, we'll solve the questions on the board. As and when the questions will come, I will explain you the concept of addition also. Okay, so first of all, question number 1 is add using number line. You can see I have drawn a number line and I have written the question, add 12 plus 6. Now what you get after you add 12 plus 6? It means on number line you have to take 6 jumps forward. आपको नंबर लाइन पे 6 जंप्स फॉरवर्ड जाने हैं, मतलब यहां से आप आगे जाओगे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18. So what number you get after you add a number line? You get 18. So what will be the answer? B. So what you will take? A B. Okay. Now second, adding 10 plus 5 is equals to 18. क्वेश्चन में हमको आंसर दिया गया है कि 10 में आप अगर 5 ऐड करोगे तो आपको 18 मिलेगा. टेक फिंगर्स, 10 लो और उसमें 5 ऐड करो, 11, 12, 13, 14, 15. तो आपको कौन सा नंबर मिला? 15. और यहाँ पे क्या दिया गया है? 18. So is it right or wrong? True or false? Yes, it is false. So what we will write? False. तो चिल्ड्रन, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको वर्टिकल एडिशन भी आएगा, हॉरिजॉन्टल एडिशन भी आएगा, एडिशन ऑन नंबर लाइन भी आएगा. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल द टाइप्स ऑफ एडिशन. ओके, नाउ द थर्ड इज इफ यू डबल द नंबर 8, व्हाट नंबर यू गेट. आपको डबलिंग का कॉन्सेप्ट आया था. व्हाट इज डबलिंग अ नंबर? अगर आप एक ही नंबर 2 बार प्लस करते हो, सपोज 1 है तो 1 प्लस 1 करूंगी तो क्या नंबर आएगा? उसका डबल मिलेगा. 1 का डबल, 1 and 1 is 2. फिर 2 का डबल करो तो 2 और उसमें और 2 डालोगे तो 2, 3, 4. इट मीन्स डबलिंग अ नंबर मीन्स एक नंबर आप दूसरी बार डबल करते हो तो आपको उसका डबल मिलता है, ट्वाइस मिलता है. ओके, सो दैट इज डबलिंग अ नंबर एंड बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर. अगर आप 8 को डबल करोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा? टेक द फिंगर्स. आई हैव टेकन 8. ओके, 8 है, उसमें 8 और ऐड किए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Which number I got? I got 16. So is the answer 16 anywhere? First is 15, तो वो नहीं होगा. Second is 16. Yes, so that is the answer. So I will take 16. And this is doubling a number. Okay, moving on to the third thing, that is word problem, story sums. जो हमको बुक्स में story sums दिए गए हैं. Okay, उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है. Raj bought 18 scales. How many? 18. He bought 5 more. 5 more. मैंने बोला था जब भी more आए it means addition. How many does he have in all? In all मतलब टोटल. ये भी आपको मैंने समझाया था while we were doing these story sums. Okay, so 18 उसके पास ऑलरेडी है and now he is adding 5 more. मतलब 18 में आप 5 ऐड करो, 19, 20, 21, 22, 23. What is the answer? 23. So let us check the option. A is 23, B is 24 and C is 13. So what is the answer we got? 23. And the right answer is A. So we will tick A.
बेस्ड ऑन दिस एग्जाम में इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग नेम और अलग अलग डिजिट्स के साथ आपको मैं पूछ सकती हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 मैंने नंबर्स लिए हैं एडिशन के लिए। आई कैन टेक 3 नंबर्स ऑल्सो। आई कैन राइट 18 scales plus he bought 5 more scale plus his friend gave him 2 more scales. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही नंबर आपको अलग अलग ऐड करने हैं। I can give you more than 2 also because in this chapter you have already learned 3 additions of 3 different numbers, that is vertical and horizontal as well. तो वो चीज भी मैं पूछ सकती हूँ। Okay, so this is the 4th one we did. Now moving on to 5th. This is the regular way of addition जो आप vertical addition करते हो। अब addition में with and without grouping I have already told you. With grouping means कि जब आपका आंसर यहाँ पे 9 से बड़ा आए, मतलब वंस में अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़े, 9 से बड़ा नंबर आए 10, तो 10 का 0 इधर लिखोगे, 1 ऊपर कैरी होगा। या आपका आंसर कुछ और आता है तो जो नंबर ऊपर कैरी फॉरवर्ड होता है उसमें आपको विथ ग्रुपिंग बोला जाता है। विदाउट ग्रुपिंग मतलब जिसमें कोई नंबर्स कैरीड फॉरवर्ड नहीं होते, राइट, दैट इज addition with and without regrouping. Okay, based on that I have taken one example. First is 34 add 42. So when we will add 4 add 2 क्या मिला 6 and 3 add 7 will be 3 add 4 will be 7. So what is the answer? 76. तो हमको इसमें फाइंड करना है। A is 86, B is 76, C is 65. What is the right answer? B. So I will tick on B, right? So this is the concept of adding with and without regrouping. ये आपने जो सम देखा ये without regrouping का, because इसमें कुछ भी carried forward नहीं किया, पर ऐसा with regrouping वाला भी हो सकता है। Okay, next is questions based on the roads. Okay, अब मेरे पास यहाँ पे 10 के बंडल से मैंने आपको ऑलरेडी बंडल मेथड सिखा दी है। ओके, एक पूरी रो मतलब ये पूरा एक बंडल क्या हुआ 10 का, तो ऐसे मेरे पास ये कितने हैं 1 2 और 3 10s मीन्स 30, राइट। और यहाँ पे लूज वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 30 plus 8 will give me 38. तो यहाँ पे कौन सा है 38 में आंसर 36 38 37. So what answer I will get? B as answer. So I will tick B as answer. So this is addition with bundle method. Okay, इसमें मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ 3 10s and 8 1s. यहाँ मैं ऐसे पूछ सकती हूँ 3 10 7 1s 3 10 6 1s. मैं स्पेलिंग के फॉर्म में भी पूछ सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये नंबर्स में ही पूछूंगी। आई कैन आस्क इन एनीथिंग, राइट। सो दिस इज बंडल सिस्टम ऑफ एडिंग नंबर्स। नेक्स्ट इज नंबर फैमिलीज। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू नंबर की भी फैमिलीज होती है। सो बेस्ड ऑन दिस आई हैव ऑल्सो टेकन वन एग्जाम्पल फॉर दैट। ओके, यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, यहाँ पे माइनस की साइन और 6, यहाँ पे भी 12 माइनस डैश, यहाँ पे प्लस की साइन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। हमको ऑप्शंस 5 6 और 8 दिए गए हैं। अब मैंने बोला था 12 माइनस 6 और यहाँ पे 12 माइनस डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा दैट नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करना, ये नंबर है ये इन दोनों के नंबर के हिसाब से आता है, मैंने आपको सिखाया था। तो 6 में और कितने ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एडिशन की साइन है, 6 में और कितने ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा। 7 8 9 10 11 एंड 12, तो कितने ऐड किए 6 में 6 मोर। सो व्हाट विल बी द आंसर 6। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूं 6 प्लस 6 इज 12, और सिमिलरली 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 6 6, राइट। सो द आंसर विल बी 6। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट इज represent on abacus. This is also a type of addition and this is also based on addition. Represent on abacus. तो abacus में आपको already यहाँ पे tens और ones में roads में आपको beats दिए गए हैं। आपको मैंने abacus दिखाया था और समझाया भी था how to represent number on abacus as well as how to
add and subtract also on abacus. Okay. Now, first is 15, second is 25, third is 35. हमको नंबर्स दिए गए हैं, उसके ऊपर से हमको देखना है कि ये कौन सा नंबर फॉर्म होता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टेंस. टेंस में कितने हैं? 1, 2 और 3. ओके. और वंस में कितने हैं? आई एम राइटिंग हियर, इट इज 3. वंस में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. सो 3 and 5. सो क्या नंबर मिला हमको आंसर? 35. इज द आंसर 35 एनीवे? A is 15, B is 25, C is 35. Yes. So we got the answer as 35. तो जो सही नंबर है वो आपको रिप्रेजेंट करना है. यहाँ मैं इसका अपोजिट भी पूछ सकती हूँ. मैं आपको नंबर्स वहां पे लिखूंगी कि ये नंबर आप एबेकस में रिप्रेजेंट करो. तो आप एबेकस में ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? टेंस में 3 बीट्स डालोगे और वंस में 5 बीट्स डालोगे. ओके. So this is the way of adding and showing the numbers on abacus also. Okay. Now 9th is, if you add 21 plus 25 plus 23, what number you get? This is horizontal addition, the same way vertical addition. आप ये 3 numbers add करोगे तो आपको कौन सा number मिलेगा? So let's see. First adding from ones place, 3 and 5 is 8. 8 plus 1 is 9. So ones place पर 9. और tens place पर 2 and 2 is 4. 4 and 2 is 6. So tens पर 6. So what will be the answer? 69. So where is 69? It's here. So we will tick this. ऐसे भी addition आपको आ सकते हैं. And last is based on, you can say this is a repeated addition or you can say this is multiplication. Both the things. कि multiplication भी आपको एग्जाम में आएगा. What is 2 times 8? It means आप 8 को 2 times करते हो तो क्या मिलेगा? 8 plus 8 will give you 16. यहाँ आप multiply करो. 2 times मतलब 8 multiply by 2. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ what is 3 times 8, तो आपको 3 multiply by 8 करना है. यहाँ पे 2 times 8 है तो 2 multiply by 8. So what will be the answer? 16. So I will take 16 as an answer. So children, this is the way how you add with the help of these different things. I hope you are clear. Now we'll move on to subtraction. Children, now we will see how to subtract numbers. We have already done about addition. Now it is time for subtraction. First of all, the way we count any addition on number line, the same way we backward do the subtraction on number line. That is counting backward, or you can see we deduct the number. So let us start with number line. First of all, the first question is subtract using number line. Again, there is a number line on the board. While subtraction, remember you have to count backward. So the question is 12 minus 4. It means यहाँ पे okay, I have taken a wrong number. It should be 12 minus 2. Okay. 12 minus 2. Okay. So if I count backward, I take 2 jumps back. This is 1 jump and this is second jump. So what is the answer? 10. So what answer I will get? A6, B10, C5. What will be the answer? B10. Why? Because we are counting backward. Addition में counting forward, subtraction में उसका reverse counting backward. Okay. So this is subtraction using number line. Next is subtract 18 minus 2 is equals to 16. हमको आंसर दिया गया है कि अगर आप 18 में से 2 डिडक्ट करोगे तो क्या आपको 16 मिलेगा. I have taken 2 fingers and deducting 2 मतलब backward counting. 18 में से 2 backward counting is 1 is 17, 1 is 16. So what answer we got? 16. So is it right? Yes. So it means true. So I will write tick a right against it. Now the third is subtract. Tens and ones are given. 45 minus 28. Now let us see 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इससे एक बोरो करना पड़ेगा. सो वी विल डिडक्ट दिस. वी विल प्लेस 3 ओवर हियर और यहाँ पे 1 बोरो करूंगा. तो ये कौन सा सबट्रैक्शन हुआ?
बोरो करने वाला, इट मीन्स विथ रीग्रुपिंग, सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग, जिसमें आप दूसरे नंबर से एक नंबर बोरो करते हो, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग. Okay, now 15 minus 8, what is the number? 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So it is 7. So यहाँ पे क्या आएगा? 7. And 3 यहाँ पे है क्योंकि इस 4 में से एक गया, so यहाँ पे 3 बचा. 3 minus 2 will give you 1. So the answer is 17. So what is the answer 17 over here? B. तो हम लोग किसको चूज करेंगे? B को. Okay. Now this was about regrouping. The same way ये वाला सम आप देखो. This is add. It should be subtract. Okay. This is subtract using tens and ones. यहाँ पे ये जो है this is without regrouping. ये वाला with regrouping था, ये वाला without regrouping. So let us do this first. 6 minus 6 will give you a 0. And 8 minus 2 will give you 6. So the answer is 60. So which is the answer in this? A, B or C? It's B. So we will take a B. And this is no borrowing from the tens one. So it means this type of question is of subtraction without regrouping. Okay. Now again coming to this question. Okay. Saroj bought 18 scales. This is these questions are word problem, okay, or story sums you can say. Saroj bought 18 scales. She gave 6 scales to Reena. How many does she have in all? So 18 में से आपको 6 डिडक्ट करने हैं. Why? Because जब भी word gave आया, it means देना. देना means subtract करना. Okay. So इसमें आपको क्या पता चला कि this question is of subtraction. So उसके पास 18 scales थी, उसमें से उसने 6 दे दी. So let us deduct 6 backward counting. 18 minus 6, 17, 16, 15, 14, 13 and 12. What is the answer? 12. So let us check which is 12 in this. A is 13, B is 12 and C is 11. Which is the right answer? B. So we will give a tick to B. So these are story sums or word problems. Okay, these type of sums can be asked also in exam. Okay, now moving on to question number 6. Now again, you can see there are 3 different tens and ones. So how many tens are there? 1, 2 and 3. And how many ones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it means 38 tens, right? I am doing here rough work. You can check it out. 38. This number represents 38. Again there is a minus sign. So we'll place a minus. And how many are to be subtracted? 1, 2, 3, 4, 5. 38 minus 5 is equals to, what is the answer? You can do it vertically also. 8 minus 5 is 3. And यहाँ पे 3 का 3 है, आगे कुछ नहीं है. So the same number will be carried down. So the answer is 33. So where is 33? B. So what answer we got? B. ये आपको एडिशन में भी आ सकता है. The same thing can be asked for subtraction also. आपको ये बीट्स ऐसे दिए गए होंगे, यहाँ टेंस वंस दिए गए होंगे, उससे आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. Okay, so this is also one of the way of subtraction. Now next is subtract 30 from 50. Now what does it mean? It means आपको 30 50 में से subtract करने हैं. ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि 30 minus 50. Don't do that thing because you will be confused. Always the smaller number is subtracted from the bigger number. Remember that. So हमको 50 में से 30 deduct करना है. So what is the answer? 20. So what will be the answer over here? A, B or C? It's C. So we'll give a tick to C. Okay. Now next is tables. Okay. Now it's a time for tables. Okay. I have already taught you table of 6, 7 and 8. And based on that, we can have questions in exam also. Okay. So first is 6 multiplied by 2. What is the answer? 6 times 2. It will give you 12. So here the answer is A. और एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकती हूँ, does
6 multiplied by 2 is equals to 18. Yes or no, true or false? तो आपको उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में देना होगा. Okay. Similarly, next is 8 multiplied by 5. So for this you need to remember the table of 8. 8 5s are 40. So what is the answer? A. अगर टेबल्स याद नहीं होंगे तो आपका कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाएगा. So it is must that you learn tables. Okay. Next is 7 multiplied by 4. 7 ones are 7. 7 twos are 14. 7 threes are 21. And 7 fours are 28. So what will be the answer? B. 28. So you will take B as the answer. Again tables. यहाँ पे भी आपको कोई याद नहीं रहा तो आपको बहुत टाइम जाएगा रिमेम्बर करने में, आंसर लिखने में, and because of that you can lose your time also. So children, this was recap of chapter number 2, addition and subtraction of two-digit number, as well as tables of 6, 7 and 8. I hope children you understand the concept and you will practice the same at home. And along with this I will post a worksheet with this video so that you can have a better understanding of the chapter, and I hope you will solve the worksheet thoroughly and will prepare for the exams also. Okay children, so we'll meet in our next